marketing for Power to SME. I'd like to take the opportunity to welcome our esteemed speakers, Dr. Kumar sir. I think I've had a, okay. Dr. Kumar sir, who's former CMD and SIC, where he took it to glorious heights. And he made a loss-making PSU into a profitable one. And we have been very lucky to have him actually join us. And he's been with us for many, many years now at Power to SME, where he's our external affairs advisor, and he advises us on issues across the board. So welcome, sir. Thank you. Thank you for the Mr. Praveen Khandelwal, who's Secretary General of the Confederation of All India Traders, and Mr. Vikrant Panchvatkar, who's the Assistant GM Business Excellence, Mahindra Logistics. We're hoping that today we will be able to, with this esteemed panel, speak on really supply chain resilience and the importance of it for MSMEs. How do you navigate disruptions? How do you develop agility? And how are you able to not just identify vulnerabilities in the supply chain, but also address them and thereby build a very strong, agile framework for supply chain? So I'd also like to take this opportunity to welcome all our guests here who've taken out time to come and attend this webinar of ours. We would request you all to give your valuable inputs. If you have any questions, please write them in the chat box, and Kumar Saab will ensure that we address them at the end of the session. I'd also like to take this opportunity to spend 2 minutes to introduce you to Power to SME and what we do as a company. Shivani, can we have the presentation? Shivani? Yeah. Yes, ma'am. Next slide. One second. So we were established in 2012, and it'll be 12 years this year. In January, our founder and CEO is R. Narayan, who is a well-known, recognized industry leader and who has championed the cause of SMEs resiliently over years. And the last many years, as a position holder with FICCI CMSME, his last position there was president, and he was president till end of last year. Our approach has been, as Power to SME, to provide what we call a digital ecosystem, which drives SME growth, which addresses SME problems by providing what we call as enterprise-grade solutions, sourcing benefits, and financial solutions. It's an innovative business model with no intermediaries in the middle, and the aim being that demand aggregation will get us more competitive pricing, which we will then be able to pass down. Next slide. So we started off as Power to SME, where we were looking at raw material and providing raw material to small and medium enterprise companies. We also started our MRO platform called SME Shops. And then we realized finance was a big requirement. And we got our NBFCL license, which we operate under BIS funds. It's our newest addition to our ecosystem. And we're trying to develop and create an offering which addresses the last mile right from raw material
to MRO goods to finance. Our product categories these are just indicative. So it's steel, polymer, paints, yarns, chemicals, many, many more. These are purely indicative. The industries that we are serving are auto components, infrastructure, engineering, textiles, electronics, plastic, paints, all of them and more. We can we can skip this, Shivani. These are our investors: Inventus, Kalari, Axel, IFC, and Nandan Nilekani, who's a strategic investor in us. They've been investors since the start of our journey. Just some awards that we have won over the year. There are many. And this is where you can find us on social media if you'd like to know more about us, and go to our website. Thank you. I will now request Kumar Saab to introduce the panelists and himself and the topic and take it forward. Thank you so much. Thank you, Sudhaji. Thank you very much. You are very magnanimous in giving my introduction. Anyway, thank you very much. We have, in fact, a wonderful panel today. And the issue is also very important: managing supply chain resilience and navigating disruptions. So I would say it has very important issues to discuss as of now in the current environment, where our country is trying to become globally competitive and trying to reach the 5 trillion economy, and a growth which is exceeding 7 to 8%, even more. So supply chain, particularly for MSMEs, involves issues like external issues and internal issues. External issues like political disruptions. You have seen the war, Ukraine war, and natural disturbances like COVID. We saw all these disruptions create a lot of problems as far as availability of material is concerned. And as a result of these disruptions, there is a risk of discontinuation of the production, and also the plan of reaching out to a larger customer base domestically as well as in the international market. In addition to not only from the point of view of exports, but also in terms of procurement of raw materials, because ultimately the entire supply chain depends on the efficient procurement of materials. And when I say procurement, it has various angles to it. The factors, as I said, external factors, besides the external factors, there are internal factors also. Internal factors relate to the internal management and the processes that any organization, whether it is manufacturing or production organization or even service organizations also, because there is a need for managing the internal resources. So, and any disruption due to the external or the internal factors leads to higher costs. And when I say higher cost, naturally the question comes is whether you can become competitive by sustaining these higher costs. So these are the important issues which we need to discuss today in our webinar. I can understand the logistics difficulty, because I was talking to Mr. Vikrant. He is very optimistic and very positive about the availability of logistics, but my feedback is that the logistics are not only giving some difficulty, but also the cost is high. As per my understanding, the international logistics cost is around 5 to 6%, whereas in India, we have to incur close to 13-14% cost of logistics. So if that is the difference, अगर 7-8% का logistics में ही difference आ जाएगा,
तो मटेरियल में हम नेचुरली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कॉम्पिटिंग विद developing, fast developing economies in the Southeast Asian countries. So it will be difficult for us to, compete. तो एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हमें कैसे कम करना है और इसको कैसे मैनेज करना है. सेकेंड थिंग इज हमारे इंटरनल प्रोसेसेस. हमारे जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसमें भी हमें प्रोसेस माइनिंग करने की जरूरत है. और उसमें हर एक स्टेज पे हमें ये देखना है कि हम क्या इन्वेंट्री में अपना जो एफिशिएंसी लेवल है उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. तो एक तरफ है सप्लाई चेन रॉ मटेरियल्स की और दूसरी तरफ सप्लाई चेन है फिनिश गुड्स की हमारे. तो दोनों तरफ की सप्लाई चेन को हमें एफिशिएंटली मैनेज करना है. और इसके बीच में आती है प्रोडक्शन प्रोसेसेस. प्रोडक्शन प्रोसेसेस में हम मतलब सप्लाई चेन का इन्वॉल्वमेंट उसमें भी है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल JIT. अब इट्स ए वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, आई मीन प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्निक, बट देन there are some people who have taken it much beyond our expected level of JIT. Abhi I was in Maruti to look at their operations. They showed me the conveyor belt where all the one by one एक process हो रही थी, and the belt was moving with one additional process. They have gone to the level of implementing JIT to the extent that सप्लायर से जो मटेरियल आ रहा था ट्रक के अंदर, वो डायरेक्टली ऑफलोड हो रहा था कन्वेयर बेल्ट के ऊपर. द मटेरियल वाज नॉट गोइंग टू स्टोर्स कि वहां पे डाउनलोड होगा और उसके बाद वो काउंट होगा, उसके बाद वो बिन्स में रखा जाएगा और उसके बाद वो इशू होगा. नो, मटेरियल कमिंग फ्रॉम द सप्लायर वेंडर्स, जो उनके टियर 1 टियर 2 सप्लायर्स हैं, truck directly offloading material at the consumption stage where the consumption is taking place. So they were offloading one by one, and it was being consumed on the conveyor belt. So that is the kind of operations people have implemented. Large companies, of course, Maruti is a big company, but then it's a learning basically how supply chain can be effectively managed to reduce the cost. Now, if we talk of risks are many, as you understand. If the raw material supply stops, you have seen during COVID what happened. You have seen during Ukraine war also what happened to different kinds of materials. And we have seen in the international situation 2 years back when steel, became a very important commodity and prices went up so high because of the global demand. So these are the factors कि आपकी डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, आपकी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज हो रही हैं, आपके इंटरनल प्रोसेसेस कैसे मैनेज हो रही हैं, आपकी all these factors are associated and directly linked. The question is, what is the best practice? There are certain factors which are beyond our control. You can't have control over the political situation around the world. You can't have control over the natural disasters or natural, reasons like COVID. But then you have certainly controls over your internal processes, your management, your working capital, availability. अब आपके पास working capital नहीं है, तो even if you want material, you can't have. Your logistics cost will certainly go up because if you buy the material in short, small lots, because non-availability of working capital. So naturally, working capital also becomes an important part of the entire supply chain management. So these are the issues which I thought let me flag. And we have very eminent experts with us. हमारे friend हैं Praveen Khandelwal, who is the Secretary General of Confederation of All India Traders, a very prominent face in the industry, trading community, and a very well-known face with the government. A lot of policy changes have taken place with his leadership of the All India Traders Association, that is All India Traders Confederation of All India Traders. It's a bigger banner, in fact, than the association itself. So Praveenji, welcome. It's indeed a great pleasure having you.
ट्रेडर्स का इसमें बहुत रोल है एक्चुअली सप्लाई चेन में। और मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में माइक्रो और स्मॉल सेक्टर इतना बड़ा है कि वो डायरेक्टली लार्ज कंपनी से तो सीधे प्रोक्योर कर ही नहीं सकता, उसे जाना तो पड़ेगा इंटरमीडियरीज जो होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं उनके थ्रू ही। तो इसमें कैसे एफिशिएंसी लाई जा सकती है और इसमें कैसे हम एक सिनर्जी डेवलप कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप मुझे हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि इसका फायदा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पहुंच सके। एंड देन आई विल इनवाइट मिस्टर विक्रम पंचवटकर, who is also very well, involved with the supply chain issues, dealing with the materials and for a long time associated with Mahindra Group. So, pehle I will request our friend Praveen ji to speak about that issue. थैंक यू कुमार साहब, मेरे बहुत बड़ा चढ़ा करके मेरे इंट्रोडक्शन को देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं देश के व्यापारियों के लिए। और आज का जो विषय है सप्लाई चेन का, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि देश में सप्लाई चेन रोबस्ट नहीं होगी तो देश की इकोनॉमी उस तेजी से नहीं बढ़ेगी जिस तेजी से उसको बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के देखें तो देश में लगभग 9 करोड़ से अधिक व्यापारी हैं जो इस सप्लाई चेन का हिस्सा है। पहले ये सप्लाई चेन को हमें समझना होगा कि व्हाट इज द सप्लाई चेन। आपने बहुत ठीक कहा कि एक सप्लाई चेन है रॉ मटेरियल की और एक सप्लाई चेन है फिनिश गुड्स की। तो रॉ मटेरियल पर तो ऑलरेडी आपने काफी कुछ कह दिया और मेरा ताल्लुक फिनिश गुड्स वाली सप्लाई चेन से है, तो मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कस्टमर there is a process, there is a supply chain which was earlier called as unorganized, which is a wrong classification. It is the most self-organized supply chain in India over the world. पूरे दुनिया में इससे बड़ी सप्लाई चेन कोई है नहीं। और ये 9 करोड़ जो व्यापारी हैं वो अंतिम कंज्यूमर तक सामान लेकर के जाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में मैन्युफैक्चरर के बाद में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सुपर स्टॉकिस्ट आता है, स्टॉकिस्ट आता है, फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर रिटेलर आता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सिस्टम है। जब तक अभी तक ये सारा का सारा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और अभी कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये नहीं हुआ। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें वो सारे पैरामीटर्स होंगे और सारी मॉडलिटीज होंगी जिसके नीचे ये सारी सप्लाई चेन काम करेगी। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई गई हैं, फाइनेंसेस भी है, लेकिन उसके बावजूद जैसा जितना बड़ा लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप में जैसे अभी आपने खुद कहा कि चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे वो सप्लाई चेन हो, अगर फाइनेंसेस नहीं होंगे तो शॉर्ट टर्म परचेज होगी और शॉर्ट टर्म परचेज हमेशा कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ावा देती है। तो इस पूरी सप्लाई चेन को एक स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, मुझे लगता है उस पर हमें बात करने की जरूरत है। इसके साथ साथ फाइनेंसेस को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैसे इसको दिलवाया जाए, उस पर बात करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की क्या क्या सपोर्ट पॉलिसीज हो सकती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि हमारे यहाँ इंडिया फेडरल स्टेट है और यहाँ पर ट्रेड स्टेट सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कनाइवेंस विद स्टेट गवर्नमेंट वो पॉलिसीज कैसे आ सकती है जिससे इस सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन इस सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है कि जब मैन्युफैक्चरर, अक्सर ये देखा है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है जब वो अपने नीचे सप्लाई चेन बनाता है तो वो वन साइडेड एग्रीमेंट करता है। और वन साइडेड एग्रीमेंट करने से क्या होता है कि मान लीजिए आज दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, किसी कंपनी ने मुझको यहाँ पर
अपना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, मैंने पूरी मेहनत करी, सारा काम किया, लेकिन ओवरनाइट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देता है, तो वो उससे उससे इंस्टेबिलिटी बाजार में होती है, किसी को अपना श्योर नहीं होता। तो अभी हमने हमने भारत सरकार को कहा है कि एक लॉ ऑफ फ्रेंचाइज बनाया जाना चाहिए। वो लॉ ऑफ फ्रेंचाइज में वो सारे पैरामीटर्स हो जिससे कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, देखिए कंपनियां प्रोड्यूस कर सकती हैं, कंपनियां डायरेक्टली बाजार में नहीं जा सकती क्योंकि उसके लिए हमें सप्लाई चेन की जरूरत है। तो कम जितनी भी कंपनियां हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो वन साइडेड काम ना कर पाए, इसको एक रीजनेबल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन और एक्सेप्टेंस सप्लाई चेन द्वारा होना चाहिए। अभी तो सारा सिस्टम सब टेक्नोलॉजी पर चला गया, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हुआ है, लेकिन इसके लिए भी एक एक फूल प्रूफ मैकेनिज्म की जरूरत है, जिसके जरिए और जो लोग हैं अगर उनको टेक्नोलॉजी अपनाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हेल्प सेंटर अगर नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी इस सप्लाई चेन को कराना पड़ेगा और इसको इन टोटलिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट लेकर के सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ट्रेडर हो या इंटरमीडियरी हो या कोई भी हो। अगर सब मिलाकर के काम करेंगे और होलिस्टिक, अभी तक हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से चल रहा है, हमारा सप्लाई चेन अपने हिसाब से चल रही है, लॉजिस्टिक अपने हिसाब से चल रहा है, रिटेलर अपने हिसाब से चल रहा है, तो उससे सारा मामला अनऑर्गेनाइज्ड है। ये सारे सप्लाई चेन के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको सबको एक साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पावर टू एसएमई को शुरू किया, तो एसएमई को क्या क्या बेनिफिट्स और मिल सकते हैं, सरकार से हम क्या क्या चीजों को ले सकते हैं, लेकिन बदले में सरकार को दे भी क्या सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि सरकार बिना लिए कुछ देने वाली नहीं है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि क्या तो सरकार से लिया जाए और बदले में सरकार को क्या दिया जाए। ये मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो बातें सुनने के लिए तैयार है, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, वो संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज की आपकी जो ये टॉक है, ये कहीं ना कहीं उन सारे इश्यूज को लेकर के आएगी, और मैं ये जरूर विश्वास दे सकता हूं कि इसका जो भी समअप निकलेगा तो आपकी मदद से, क्योंकि आपने भी आप भी सरकार का हिस्सा रहे हैं और आपको भी सब समझ में आता है कि सरकार कैसे काम करती है, तो आपके साथ मिलकर के हम कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो, उसके लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम कोई फुल प्रूफ पैकेज लेकर के जाएंगे, तो चाहे वो लॉजिस्टिक हो या कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से सरकार उसको देखेगी, उसको सुनेगी, उसको समझेगी और सपोर्ट पॉलिसीज इसके लिए आएंगी, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। थैंक यू खंडेलवाल साहब, आपसे बात करके और आपके विचार सुन के मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है कि उसमें कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। आज भी देखिए 2 चीजें नई निकल के आई कि लॉ फ्रेंचाइजीज, अब ये फ्रेंचाइजीज रेगुलेशंस अगर बन जाए, इसका कोई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट बन जाए एक, कि कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या एग्रीमेंट होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, कैसा फ्रेंचाइजी होगा, कैसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी। आज आप स्टील अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसका डिफरेंट एग्रीमेंट है, आज आप इंडियन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसका डिफरेंट एग्रीमेंट है। वो कुछ सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो कुछ सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो कुछ गारंटीज मांग रहे हैं, वो कुछ गारंटीज मांग रहे हैं। तो एक ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, बड़ी कंपनियों की, मैं इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंपोर्ट में तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है, फॉरेन सप्लायर है, अगर फॉरेन वेंडर है तो हमें तो उनकी टर्म्स पे लेना ही पड़ेगा, वो एलसी देनी हो या बैंक गारंटी देनी हो। पर इंडियन में वो भी इंडियन कॉर्पोरेट्स और इंडियन पीएसयूज, पर्टिकुलरली सीपीएसयूज, सेंट्रल पीएसयूज या स्टेट पीएसयूज, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क टुगेदर
in sync so that standard common guidelines can be given. Ultimately, traders are a big chunk of Indian economic sector. 9 crore traders who are probably sustaining how many families? 9 crore families. Rather more than that. More than 10 crore. We have 25 crore employees also. See, so half the almost 1/4 of the population. So trading तो actually क्या है, rampant everywhere you find traders. तो अगर हम इनको कुछ सुविधा दें, नेचुरली इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, इनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव होगी और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा एमएसएमईज के ऊपर भी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनके ऊपर भी, उनको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। अल्टीमेटली ट्रेडर को अगर 2 पैसे बचेंगे तो नेचुरली उसका वो बेनिफिट पास ऑन करेगा ना मैन्युफैक्चरर को, कुछ तो करेगा ना, पूरा तो नहीं करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या किया सकता है कि कैसे जॉइंटली ये काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसपे हम गवर्नमेंट से टेकअप कर सकते हैं। आई विल थिंक ओवर दिस एंड देन विल गेट बैक टू यू। I also suggest that our participants, in case they have any suggestions, they can also write to on the platform and send us the suggestions and recommendations so that we can compile. मैं इतना तो कह सकता हूँ कि खंडेलवाल साहब कुछ लेके जाएंगे गवर्नमेंट में तो वो अच्छी तरह से सुना जरूर जाएगा। उसको हम सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से। So thank you very much. And the working capital issue that you mentioned, na, right rate of interest, proper rate of interest, ये भी एक बड़ा इशू है। ट्रेडर्स में पहले एक टाइम था जब स्मॉल ट्रेडर्स अप टू ए सर्टेन लिमिट वर गिवन कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लाया जाता था। और अभी ट्रेडर्स को एमएसएमई की वजह से प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है, परंतु उनके लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंशिएशन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। तो ये भी इशू है कि हम इसको भी, वही स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी आप टर्नओवर कुछ कर दीजिए कि उस पे कैसे हम उनको हेल्प दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू होगा जिसपे गवर्नमेंट को हमें सजेस्ट करेंगे। तो लेट मी नाउ इनवाइट अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। खंडेलवाल साहब आप बने रहिएगा, क्वेश्चंस होंगे तो हम डिस्कस करेंगे फिर आगे। Vikrant ji, over to you now. He is a very seasoned and very experienced executive with Mahindra Group, in fact dealing with supply chain issues only. We were talking earlier. I don't know, my understanding about the logistics cost may be incorrect, but I know a lot of further developments have taken place, particularly in terms of availability of infrastructure, and as a result of that, the cost also would have certainly, got rationalized or maybe reduced. So we would like to hear from you, Vikrantji, and how do we manage our risks, supply chain, so that our production doesn't get affected. One issue, of course, I can say the seasonal fluctuations, which are known to us, and we can plan accordingly. So that risk is already, within our control. But then the factors which are beyond our control, how do we manage them? Over to you, Vikrantji. You can unmute yourself. Yeah, am I audible now? Yes, please. Yeah, thank you. Thanks a lot. So let me first come up with the topic definition first. What is supply chain resiliency? Correct. Basically, supply chain resiliency is the ability to quickly respond to the operational disruptions through flexible contingency planning and flexible logistics systems. Correct. And then forecasting the material sourcing from one point to another with properly designed supply chains. Correct. And what I am trying to refer over here is a flexible logistic system, the new term which I am trying to point out over here. We must have heard earlier that flexible manufacturing system, but flexible logistic system is such system that which is able to quickly ramp up and quickly ramp down basis the customer demand. In a way, it's a kind of a lean logistic system with a with again approach and towards the green supply chains. Correct. Means right now we are talking about the cleaner and greener world. Correct. And also India is bound by the Paris climate treaty. Correct. And we are now trying to be carbon neutral. Correct. And reducing the ill effects of the
even the pollution which logistics, or let's say the routine movements are contributing to it. So this is what basically what supply, flexible and logistic supply chain system can contribute to it. But as of now, means are we means as we are aware that we are currently living in a VUCA world, that is volatile, uncertain, complex and ambiguity, correct? As rightly mentioned by Kumar sir, that both the factors, internal and external, are not in our control, correct? Many a times means uh, problems like natural calamities, floods, earthquakes, tsunamis. Recently, we have seen during the Japan tsunami and Japan earthquake, correct? It is beyond our control specifically, and means even the COVID has shown us that the global, it can be a global shutdown also, correct? Means natural calamities to an extent will have a local effect, correct? वो किसी एक region तक सीमित होता है, but pandemic like situations and COVID like situations have a global shutdown kind of an effect. And even in case of wars also, which is beyond our control, correct? Some pockets of the world are currently having impact of on their side, correct? But it is having a larger effect on the other side as well, other part of the world as well, correct? Though we are not directly means contributing to it, but to an extent the manufacturing aspect of it getting disturbed, and even the supply chain aspect of it getting disturbed, correct? So that is basically causing some sort of turmoil in the entire process, and it is having a long lasting, or let's say some sort of different effects on the entire pattern, correct? Entire the ecosystem of the logistics, correct? And changing pattern of the customer, correct? Right now means we are in field of e-commerce, correct, where the markets are driven by the internet, correct? And right now what we are learning the next day delivery, correct? Previously it was used to happen that something is means we were not aware previously. Even the COVID has taught us many things like that. Online market can be then driven also, and we can see the penetration of this particular new emerging market of e-commerce in smaller pockets of the country as well, correct? Right now even means it is a good opportunity what I can consider for all SMEs, correct? That they can directly connect with the consumers, correct? By let's say this kind of a e-commerce change and hyper local market. So basically, previously we were talking about the deliveries after 3 4 days, 8 days, correct? Because of the supply chain, which it's a completely unorganized sector, correct? But right now, major giants are there. A lot of multinational companies are entering in that particular segment, in that particular market. And what we are currently talking about of delivery within a 1 hour. If you take an example of let's say hyper local market and dark stores, the many of the e-commerce companies are now means even they are in the field of grocery selling also, correct? So they are now talking about the immediate deliveries. So how exactly this change has happened, correct? Means right now means I can see that we are in a process of evolution, correct? Right now after GST reforms, the sector is started now unfolding, and a lot of opportunities and technology implementation scope is there, correct? Delivery and storage network points are now becoming closer, correct? Previously what exactly used to happen that because of the GST and the taxation structure, correct? The plant and the manufacturing locations has got near to the consumption point, but this is not the case right now, correct? Means though irrespective of the 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 manufacturing point is located at one location, but we can see that the goods are now getting transferred from the Jammu and Kashmir to the farthest part of the country. How exactly it was been possible? Because of the change of the government approach and the recent GST reforms, correct? Now the taxation is same throughout the country, correct? So it has now means promoted the growth for the 3PL industry, that is the warehousing network throughout the country. And right now what the companies are trying to build their stockyard, their warehouses near to the consumption points, and now they are widely expanding on that part. Previously there was the regional distribution centers, obviously, which was present in the country, but those were very few. But right now if you take an example, even the small manufacturer now can opt the space, correct, in a large mega scale shared facilities like build to ship warehouses, which is a shared facility wherein
it is not only restricted to for one manufacturer or let's say by for one company. All put together, the 3PL industry has that particular concept wherein they are building the facility mega network of the warehouses, correct? Wherein even the small companies can also opt for the space, and even they will be charged on the per square feet basis, correct? Whatever the space they are consuming in within that shared facility, only that they have to pay for the rent they have to pay for, which previously was not there in the country, correct? So this is now bringing the change technological aspect to it. And I just want to add something to it, how exactly means the technology will play the role in various facets and various stages basically. So first is digital supply chain, correct? Means use of artificial intelligence. What we can see that right now, massive amount of data is now getting flowed in, because previously it was not getting tracked, though it was there, but it was not in an assimilated form. Data to tha, but it was not being uh, in a collective format. Right now, what the closed network of the control tower through GPS surveillance. Now we are now getting the each and every minute information. Once, let's say the packet is dispatched from the warehouse, obviously you will get a SMS notification from the from the sender that your so and so shipment has been now been dispatched, and the possible arrival date is so and so, correct? How exactly this is possible? Through the closed network of the internet, correct? And connecting the dots, the right dots at right point in time. So basically it is what is is possible because of the technology penetration, correct? And most important is building the correct network optimization, correct? So as we know that a lot of scope is there when it comes to uh, the network building, correct? Where exactly we have to, let's say, set up our warehouses, correct, based on our consumption point, or let's say based on the market requirement from the customer end. So a lot of softwares are now coming in the market, where exactly based on the demand pattern and the forecasting pattern, uh, the warehouse network and even the warehouse design is now possible, correct? The next look when it comes that regarding the vehicle availability and the driver availability, as sir was rightly mentioning, Kumar sir, at the beginning, that the availability of the right vehicle is another challenge, correct? But right now we can see the Ola and Uber has shown us the way how exactly it can be done for the local transportation, correct? In a similar way it can be done even for the goods movement, both for inbound as well as for the outbound, and that means for the raw material as well as for the finished goods, correct? The driver and the vehicle availability can be brought on one single platform through the internet with through mobile apps, correct? And basically they will be able to know where exactly the load is, and even the consumer, or let's say the point of consumption will also will know the different rate at which basically it is possible, correct? So they can compare, and they can basically opt for the right size of it. Even though, let's say, if I don't want a, let's say, full load vehicle, I can opt for the, let's say, part load vehicle through the express network which is available, and it can be then minimize the speed at which it is getting transported from one location to the another. Again, real time tracking which I was mentioning through the control towers and close monitoring of the vehicles will enable to the consumer to know the exact status where exactly it is, and also it will suggest the route, correct? The route optimization, correct? Network optimization and route optimization is another important facet to it, where exactly the software will tell you based on your demand and your conventional data, correct, which is the right size of vehicle to be choose for. Many a times what we end up is selecting the wrong vehicle. If it is under large vehicle, obviously we are going to pay more for that. So that can be minimized with the help of a on completely optimized network channels through the software enabled algorithms, correct? For that, basically we have to give certain inputs to the software, and we have to design it correctly. Another important part is, let's say, the security of the goods which is getting transported, correct. A lot of many a times we see it is more prone towards the theft, or let's say even the drivers meeting accident because of the rash driving. So now, right now there are a lot of advanced technologies are there. We must have heard about the ADAS, advanced drivers assist system, and a driver monitoring system. So these kind of a latest technologies which are there for the high end car segment, which right now as a Mahindra Logistic, as a service provider, we are trying to bring it for our clients. We are deploying
it on our transportation long haul vehicles as well, correct? So wherein the driver behavior, if let's say driver is speaking on a phone call or he is getting some drowsiness because of the night driving conditions, automatically the alert will get generated. So it, in a way, we are just trying to ensure the goods and as well as the person safety or when the vehicles are currently running on the road, correct? Next and most important part which I would like to add over here is explore the non-conventional delivery channels, correct? Right now we are majorly dependent upon the road network, correct? But obviously we should also explore the rail network, the multimodal transport, and waterways also. Currently government is also promoting this. Even we see certain channels were opened by the government of India in plain of Ganges, correct? So that we should definitely explore because it is comparatively cheaper, and we should also try and see how exactly we can rely on the green vehicles, though the initial cost of investment is comparatively large when it comes to the green vehicles. But if you see and if you compare the complete the landed cost per kilometer, the electric vehicles are now proving better option to it. So obviously now that sector is also evolving, and a lot of new technologies are coming in the battery technology segment also. So that is going to be a game changer in coming days, and which will definitely bring down the cost of logistics furthermore in the country. Yeah. And apart from that, the technologies like blockchain, correct? Currently, we are means not talking much about it, but definitely that is going to play a major role on in coming days, wherein the complete supply chain based on its historical data is now getting tracked, and we can check whether how exactly it is contributing at the point of consumption and at various stages. Based on the historical data, we'll get the algorithms and we will get the suggestion automatically where exactly we can reduce the cost of component. And I just wanted to mention over here, Kumar sir, regarding you mentioned about the JITJIS, correct, at Maruti plant. So that is another good example where exactly technology can be leveraged, correct? That is just in time and just in sequence. But apart from that, what we should also definitely see for the vendor managed inventories and the Kanban systems, correct? Basically, it's a signaling through the cards, correct, which is the Japanese technique. But basically, right now, a lot of new advancement in that segment also, wherein e-Kanban systems are generated, wherein we can digitize the complete line side storage inventory when it comes to the manufacturing plants, even in case of SMEs. The cost of investment is not in that case, but obviously we will get a complete trigger on the inventory at one fingertip, correct? Where exactly right now I am at a manufacturing stage, and same trigger can be then connected to the your vendors, correct? So obviously that communication lab which is currently was there, and the speed at which they are responding will can be bring down substantially. And as the communication is smoother in that particular case, obviously this kind of the production loss incidences because of the material non-availability, or let's say loss of opportunity, that can be substantially minimized, correct? So that is another aspect to it, where exactly technology can play a major role through it. Oh, excellent. I think, thank you, Vikrantji. Thank you very much. I think it was a wonderful, what is happening in supply chain ecosystem. In fact, I was very happy to know about the possibility of blockchain based Yes. monitoring and tracking system, because that is really going to change the entire, way that we manage the supply chain. Yeah, And means And if that comes, I don't know how far that is. Maybe it takes maybe a couple of more years. I don't know. You may be aware how much time is going to take, because blockchain development has already started, but it is not that it's only happening in certain very select areas, very limited and very, like sophisticated areas. But when it comes to inventory management, where thousands and thousands and lakhs of people need this facility, how far it is going to happen? Can you suggest how long it will yes, take? yes. Means the technology partner with which we are currently developing this for our use cases. Basically, they have done it for the farmers. One Mhm. of the agro farm industry in Maharashtra, basically they have developed it from them. Right from the farmers end, they are tracking the usage till the basket of the consumer. Correct.
at what stages basically, and at what price point, correct? These two dots basically can be connected if suppose we are having this kind of a blockchain enabled technology. So only a QR code is there. Basically, it will help us in maintaining the correct supply and the forfeit, let's say counterfeit parts, or let's say counterfeit products getting circulated in the market. So it is good even in case of the food products, or let's say high end and high cost product also, wherein basically the consumer just has to scan the QR code which is there pasted on that product packaging or so, and automatically all the information will get pop up regarding its life cycle, at what stage basically it get generated, from where it got transported, at which date, all that the entire life cycle of that particular product will be there with the consumer. So and at Yeah, how exactly it is adding value, even the nutritional contents, the other requirements. If suppose the manufacturer wants to communicate certain things to the consumer, that also can be available at the fingertips. So that is possible through the blockchain. right. No, Yeah. I agree with you. QR code will also be very helpful, but QR code will give you only historical information. But blockchain is going to give you live information. And Yes, yes. Live information which you information can. for that particular batch, that particular product, Yes, and yes. the unique. I mean, let's say if suppose I take an example of automobile spare parts, a lot of SMEs are involved into its manufacturing, correct? But the other players are also there who are producing exact counterfeit copy of it. So how exactly they can protect their IPs and their efforts by just adding some minor QR code on top of the product, so they can get exact the shelf life of the product, or let's say the product life through this particular technology. Absolutely, absolutely. I Yeah. think wonderful developments taking place. A lot of people are not aware about them. My only wish is that these technologies come faster so that you see large corporates can really handle their operations. Even otherwise also they have deployed technological tools and manpower professionals. So companies, as I gave the example of Maruti, of course, companies like Maruti and big corporates can really manage this. But when we look at the micro enterprises and those who are really struggling to manage their costs, for them, this kind of technological intervention will be of great help. And Yes. hopefully it comes sooner than later. I hope so. Yes. Yes. So going back to प्रवीण जी, एक इशू ये है जो आपने क्रेडिट का रेस किया था कि सप्लाई चेन में बिल डिस्काउंटिंग, एक तो पहले डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो चाहे फ्रेंचाइजी में हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो रहा हो, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर या रिटेलर टू कंज्यूमर, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो पेपर वर्क हो रहा है सारा। और पेपर वर्क की उसमें बिल बनता है, उसमें चालान बनता है, उसमें जीएसटी का ई-वे बनता है, उसमें रिसीट होती है, और फिर जाके कहीं उसका बिल बन के उसका पैसा रियलाइजेशन के लिए वेट करना पड़ता है, फिर उसका पेमेंट बाद में आएगा। तब तक अगर हम बिल को रियलाइज करना चाहते हैं या पैसे उसका बिल डिस्काउंटिंग कराना चाहते हैं तो वो पेपर वर्क के बगैर आता नहीं है। और पेपर वर्क में आपको मालूम है कितना टाइम लगता है भाई, उसमें तो फिजिकल पेपर जाएगा, फिर माल के साथ मटेरियल के साथ जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस होगी और वहां से फिर वापस आएगा। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी इसमें आई है, पर ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अगर डिजिटाइज हो जाए और स्मार्ट एग्रीमेंट की तरह स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन, माल जाए और डॉक्यूमेंट साथ में पहुंच गए और एक्सेप्ट होके आ गए, चाहे माल, कहते हैं मटेरियल, देखिए सप्लायर के लिए मटेरियल निकलने का मतलब उसको नया मटेरियल बनाना है, तो उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो डिस्काउंटिंग चाहिए। इसमें कोई नया थॉट अगर आपका है तो हम चूंकि ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री से, कि ट्रेड्स में तो लोग आ नहीं रहे, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग आए हैं। अभी तक जो सोचा गया था कि ट्रेड्स में सभी वेंडर्स को फायदा मिलेगा और सभी, तो उसमें तो आए नहीं है। पता नहीं अब ट्रेडर्स को तो ट्रेड्स में लिया भी है कि नहीं लिया है, ट्रेडर्स को अभी शायद एमएसएमईज को तो लिया है, बट ट्रेडर्स को एज ए वेंडर्स, एज ए सप्लायर शायद अभी लिया भी नहीं है, क्योंकि अभी तो उनको ये फैसिलिटी ट्रेड्स वाली दी नहीं है। तो ये जो एक हैसल है, मतलब एक तो हो गया फिजिकल मटेरियल मूवमेंट, दूसरा हो गया उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है,
और उसकी जो फंडिंग है वर्किंग कैपिटल की, वो जो कि बिल डिस्काउंटिंग से बहुत ही आसान हो सकती है। इस पे जरा आप अपने विचार बताएं। कुमार साहब, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा प्रोसेस है। अभी पिछले दिनों सरकार के साथ हमने एक मीटिंग की है और प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 टैक्स 1 नेशन। हमने उसमें एक लाइन और जोड़ी है, 1 लाइसेंस। ट्रेडर्स को लगभग 20 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो अब उनको आधार बेस्ड एक लाइसेंस मिल जाए जो एप्लीकेबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, तो उसमें हमने काफी कुछ सुझाव उनको दिए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिड्यूस होगा टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज दूसरा कोई चारा नहीं है कि जिसके बिना आप डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस करें। तो टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है उस पर माइटी के साथ हमारी बात चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसमें कुछ रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी है। तो कुछ कोशिश करके एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं कि जिस नेटवर्क से हमारे ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन का बोझ है वो धीरे धीरे करके कम हो। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो गए हैं। 1890 का एक कानून है, 1920 का एक कानून है, 1902 का एक कानून है, 1956 का एक कानून है। अब उन कानूनों की रेलिवेंस नहीं है, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि उन सारे कानूनों को हटाया जाए, जिससे जो बिना मतलब का डॉक्यूमेंटेशन है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में, क्योंकि जिस आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं उसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री बहुत सारे पेपर मांगे। आपको तो पता ही है, सरकार में एक बार अगर फाइल बने तो फिर सप्लीमेंट्रीज बहुत सारी देनी पड़ती है। तो वो सप्लीमेंट्री पेपर्स हम लोग, हमारा रिसर्च विंग तैयार कर रहा है और वो हम लगातार उनको दे रहे हैं। जहां तक फंडिंग का सवाल है, हमने सरकार से ये कहा है कि, और कुछ बैंकों के चेयरमैन से भी मैंने बात करी है कि हमारे आप किसी भी व्यापारी से आप उसका 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लो, और बैंक स्टेटमेंट लेकर के उसके क्रेडिट, उसके बैंक स्टेटमेंट के फ्लो के हिसाब से उसको आप एक प्री डिटरमिन्ड लिमिट दे दो। तो मान लीजिए अगर उन्होंने मेरा बिजनेस को, उन्होंने मेरे बैंक स्टेटमेंट को देखा और उन्होंने पाया कि भी मुझको 1 करोड़ रुपए वो दे सकते हैं, क्योंकि एआई के जरिए ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपका बिजनेस, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, जब वो 12 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे तो मुझे वो मेरी 1 करोड़ की प्री डिटरमिन्ड लिमिट सेट कर सकता है बैंक। उसमें हमने एचडीएफसी से काफी बातचीत की और एचडीएफसी लगभग मोटे मोटे तौर पर हम आ गए हैं, लेकिन सरकार को भी हमने उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर ये प्री डिटरमिन्ड लिमिट बन जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन रियल टाइम बेसिस, अगर मान लीजिए मैंने पैसा 4 दिन यूज किया तो मुझे 4 दिन का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, पूरा महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं देना है। तो ये इस तरीके से हमने कुछ बातचीत करने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 आध महीने में इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और हमारे जो नॉट ओनली छोटे व्यापारी बट हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, अगर वो भी होंगी तो, और दूसरा हमने उनको कहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो नॉन परफॉर्मेंस रेट है वो बहुत बहुत मिनिमल है। तो सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सिक्योरिटी। अगर आप मेरा आप यदि मेरे 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं और उसमें भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 5 साल से ऊपर का जो होगा उसको देंगे, तो फ्लाई बाय नाइट अगर कोई होगा तो वो अपने आप सिस्टम से निकल जाएगा। तो ये कुछ सुझाव हमने दिए हैं, और मुझे लगता है कि इस पर एक डिस्कशन, एक नेशनल डिबेट पर्टिकुलरली इस विषय पर जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले दिनों में इस पर चर्चा हो, ताकि और लोगों के सुझाव आए। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है। हमने एक्चुअली कुछ सजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिए थे, ट्रेडर्स स्पेसिफिक, ट्रेडर्स के बारे में ही हमने, मुझे याद है आपसे बात भी की थी, फोन पे इनपुट्स भी लिए थे। जी जी जी। हमने उनसे ये भी कहा था कि इसकी कुछ क्लासिफिकेशन बनाइए ट्रेडर्स का, जिससे कि उनको कम से कम स्मॉल जो माइक्रो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको एडवांटेजेस मिल सके, और ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये जो गारंटीज हैं, ये सब उनके लिए एग्जेम्प्ट की जा सके।
तो ये खैर कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, पर आज की डिस्कशन से हमें ये जरूर लग रहा है कि काफी काम अभी करने वाला है. देयर इज लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज स्टिल इन द पाइपलाइन. और वो चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, तो इन दोनों पे काम अभी होना है. But anyway, I mean, there is certainly a lot of improvement happening, and gradually things are moving towards the positive side. And we hope that when we, every time we meet, we have something new to share, and some improvements in the lives of people, MSMEs and traders both. So I think we come to the close of this our presentations, but Sudhaji and Shivani, if you have questions, then we can take up these questions. Sir, not exactly a question, but Mr. Ravi is saying getting working capital funds from MSMEs is not that easy. Despite providing all the necessary documents, they always look for either denying or delaying. Yeah, that is a general complaint, in fact. But let me tell you, as far as MSMEs are concerned, and now the traders are also included in that, the Ministry of MSME has launched a website. पोर्टल है उसमें MSME Champions के नाम से. So if anybody makes an application to the bank for any credit or loan assistance, and if they don't give positive response, I mean positive means when I say if they don't respond, वो negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है. But if they don't respond in terms of your expectations, you can certainly lodge that case with the MSME Champions portal, and then that issue will be taken up by the ministry through the portal with that particular bank, and whatever is the resolution of that complaint will be done. क्योंकि हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री से कि बैंक वाले लोन नहीं देते, तो उनका यही कहना है कि देखिए ऐसा है कि ये जनरल कहने से नहीं होगा, आप स्पेसिफिक केसेस लेके आइए, आप कोई एग्जांपल लेके आइए तो हम उसको टेकअप करें, और उस पर फिर उनको पूछें हम बैंक से कि भाई आपने ये वाला केस क्यों नहीं किया है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण. हालांकि आई वुड से दैट सच केसेस वुड बी इन थाउजेंड्स, नॉट इन हंड्रेड्स बट थाउजेंड्स, or maybe even more if you take all over country. But then at least few cases we can refer, and the banks also can be sensitized. So I think if there is no other question, Shivani, Yes, sir, that was the only question. then we can close this program. Yes, sir. However, I have shared a link in the chat box. I would request everyone, please feel free to drop questions there. We'll get back to you as soon as possible. Yeah. So with that advice, we come to the close. I would like to thank our friends Praveen Khandelwal ji. As always, he is always in very high esteem and very, very positive suggestions. And Thank you, sir. Vikrant ji, thank you very much. You have given us a lot of innovative ideas, which will be surely helpful for the efficient management of the supply chain. And over to you, Sudhaji. Thank you very much for organizing this program, if you are there. So I'm there, sir. Yeah. So over to you. We have concluded the program. So over to Yes, you. yes, I have. It's been a wonderful discussion. And I'd like to take the opportunity to thank everyone for their time and for lending weight to the discussions and issues that were here. Thank you, participants. Thank you, speakers. And thank you, team, for organizing a wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thanks a lot. It was you. pleasure interacting with all the dignitaries. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you.